Good morning, everyone. I hope everybody is doing well. I just woke up very late, so that's the reason. Like, the thing that I'm having in breakfast is this auntie, my favorite thing, ketchup, and this one is lassi. It feels really, really good to wake up early, but because I couldn't do that and I woke up really late, so the only option that I had was to have breakfast, which is very heavy. तो मैंने आई थिंक 4 आलू के पराठे खा लिए, which is quite filling. And the other day I was telling you about digestion. जो मुझे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, which was I couldn't digest anything. So that is where curd really helped me. खुद की बनाई हुई चाय का स्वाद अलग ही आता है. Before us falls under our face, I can't hold on. I can't hear the man so slow. We have the same old bond, but everything is wrong. My love is gone, but I've been born. I can't make it on my own. I can't make it on my own. I'm alone. My love is gone. My love is It hurts. इतना दर्द हो रहा है ये. आह, बहुत तेज लग गई. आह, it fucking hurts a lot. So I was supposed to be in the ground. But it's okay. We'll figure it out. So I'll see you guys in the volleyball match. Alright guys, match is finished. It was a very good volleyball match and obviously we won. So that's the good part. Alright, so one thing that I really want to share with you guys is few friends of mine asked me on Instagram that Rajat, it's good, but why you are not showing in your vlogs that everything you are eating in your vlogs? Why you are not weighing everything that you're eating? Like, why you are not tracking food, whatever you are eating? So the thing is, it's been almost 3-4 years. I've been eating healthy stuff, and you know, right now I have an idea about every food that I'm having. कि इसमें कितनी कैलोरीज है, कितनी प्रोटीन है, कितने कार्ब्स है. So it has become natural to me. But somebody who is just starting or either losing fat, but या तो आप फैट लूज कर रहे हो या आप वेट गेन कर रहे हो, even in both the cases आप विदाउट ट्रैकिंग मैक्रोज, so
बाय मैक्रोज व्हाट आई मीन इज आप विदाउट हर फूड में ये जानते हुए कि कितना प्रोटीन खा रहा हूँ, कितना कार्ब्स खा रहा हूँ, कितना फैट खा रहा हूँ, फिर भी आप यू कुड स्टे लीन. एंड यू नो इफ समबडी थिंक्स लाइक हे रजत यू वोंट अंडरस्टैंड, तुझे क्या पता लगेगा, यू ऑलरेडी लीन, you're lean since beginning, right? So that is not the thing. Like is when I started I was very thin. I was 45 kg at 6'3" height. Yeah, so it was really bad. But after 1.5 or 2 years I became fat. I became a fatty person. But because I was very thin, तो मैं कोई भी खाना बहुत ज़्यादा खाता था, right? So then I became fat. मैंने अपनी ईटिंग स्टाइल्स में कुछ चेंजेस करे जिसकी वजह से मैं लीन रह पाता हूँ थ्रू आउट द ईयर. सो सम बेसिक्स थिंग्स लाइक ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू वो उस इंसान के लिए बिल्कुल ऑपोजिट होगी हु आर लूजिंग वेट, और बिकॉज आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग दैट आई डू. सो फॉर एग्जाम्पल कि इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट, सो it's a very basic thing. If you want to lose weight, you need to be in caloric deficit. उसका मतलब है कि जितना आप खाते हो आपको उससे कम खाना है. It's as simple as that, right? और दूसरा है कि you need to eat enough protein to maintain that muscle. Means आपको enough protein खाना होगा जितनी भी muscles आप build करते हो, right? And the third one, which is very basic, you need to work out every single day. There's no shortcut. कोई शॉर्टकट नहीं है. इफ यू वांट टू लूज वेट, इफ यू वांट टू बिल्ड मसल, इफ यू वांट टू गेन वेट, द बेस्ट थिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट वर्क्स, बट द बेस्ट थिंग यू कुड डू इज टू प्ले विथ वेट्स. यू कुड जॉइन अ जिम, एंड जिम इज नॉट रिक्वायर्ड. जिम बहुत एसेंशियल नहीं है. आप अपने घर पे भी होम वर्कआउट्स कर सकते हैं विथ डम्बल्स. इफ यू कुड बाय अ डम्बल, पेयर ऑफ डम्बल और बारबेल, वॉट एवर यू कुड फाइंड. सो आप घर पे भी होम वर्कआउट कर सकते हैं. So that's the same thing. तो you need to play with weights. आपको weights के साथ खेलना पड़ेगा to achieve whatever your goal is. So that's the thing. And something which is like, for example, I love to have liquid diets. Like I love to have smoothies. I love to have shakes, smoothies, juices. So मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टू हैव. मुझे बहुत पसंद है स्मूदीज, जूसेस एंड शेक्स. बट समबडी हु इज लूजिंग वेट, तो उसके लिए इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल अगर वो लिक्विड डाइट्स को या तो रिड्यूस करे या जस्ट कंप्लीटली कट डाउन करे. क्योंकि अगर आप लिक्विड डाइट्स लेते हो, सो द थिंग अबाउट लिक्विड डाइट्स इज कि आप नेचुरली आप ज़्यादा ले लेते हो लिक्विड डाइट इन वेट. And if you also like to have liquid diets, then it's the best thing. One more thing that I do is, जैसे for example, if I'm having 4 to 5 meals in a day, मैं 4 से 5 मील खाता हूँ अपने दिन में. तो what I do is, I rotate in every meal I rotate my protein and carbs. Every meal I rotate my carbs and fats in every meal that I'm having. For example, मैं अपनी first meal breakfast है, तो मैं I would have a combination of protein and carbs. मतलब जो भी मैं खा रहा हूँ उसमें प्रोटीन एंड कार्ब्स डोमिनेटिंग होगा. तो प्रोटीन एंड कार्ब्स, एंड अगेन यू कुड रोटेट इट विद प्रोटीन एंड फैट्स. सो दैट्स हाउ यू रोटेट. मतलब आप जो भी मील खा रहे हो पूरे दिन में, यू कुड रोटेट एवरी मील दैट यू हैविंग. उससे एक तो इट बिकम्स वेरी इजी टू डाइजेस्ट, राइट? द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट फैट लॉस इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स सेड, he encouraged me to make these kind of videos on fat loss and weight loss also, because I think he has lost around 20-30 kg, and said if you're gonna watch it, I'm super duper proud of you, man. So he told me like, Rajat, तुझे ये वाले videos भी, ऐसी videos भी बनानी चाहिए, because ऐसी videos भी बहुत ज़्यादा helpful होगी for all the people out there. Thank you, Sid, for suggesting me. And so back to topic is like, so that's it. Like that's how I stay lean throughout the year. You don't need to track. Like आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं. Yeah, okay. So one thing that I really want to tell you in between that is, if you are not getting results in that, you could try tracking your macros. कि आप पूरे दिन में जो भी खा रहे हैं,
इफ़ यू आर ईटिंग कार्ब्स, फैट्स, और हर चीज़ को आप ट्रैक करके कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्ब्स खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए, you know, that you could try, figure it out that it works for you or it doesn't work. If it works, then that's the best thing. Like, nobody can tell you anything. If it works, bro. Alright, so मैं इतना ज़्यादा बोल लिया. So I'm gonna take my shower abhi, and I hope you get some value out of this vlog. And if you do, just drop a comment down below that you liked it. So if you liked it, please share it with one of your friend whom you think that this video would be very helpful for them. And that's it. I'll see you in the next one.